हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो रे आमे अकाउंटिंग रो बेसिक अकाउंटिंग टर्म विषय जानथिले। आज आउर किछि बेसिक अकाउंटिंग टर्म विषय जानिबा डिस्कस करिबा। आपन जे हम चैनल रे नुआ आछंती तो वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फ्रेंड्स मन सहित शेयर करंतु। आज वीडियो रे पुनी अगेन जानिबा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सेवेंथ अकाउंटिंग टर्म होची डेटर जोटे हमर बी साइलेंट है। डेप्टर किए ना, डेटर इज अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज बिजनेस बा एंटरप्राइज आउटसाइडर को किछि गुड्स क्रेडिट रे सेल करछि, कस्टमर को क्रेडिट रे गुड्स सेल करछि, से कस्टमर होछि बिजनेस पई डेटर। Next, the total amount due from sundry debtor is called book debt. Total amount जेतिक हम पायर अच्छे, लाइक हमें राम को क्रेडिट रे सेल करछे, श्याम को क्रेडिट सेल करछे, गीता को सेल करछे, मतलब टोटल अमाउंट टाको मिसेइ देले कोन जाय ना बुक डेब्ट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म होची क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods and services. बिजनेस बा एंटरप्राइज जाटू क्रेडिट रे परचेस करछे, जी हमको गुड्स सप्लाई करछे तो से होची सप्लायर बा सप्लायर अदर मींस क्रेडिटर। आमे बिजनेस टाकू पैसा देवार थाए तो बिजनेस पई से होची क्रेडिटर। सपोज परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट तो एठी आमे जाटू परचेस कले या जे हमको गुड्स सप्लाई कला से होची बिजनेस पई क्रेडिटर। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म होची डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, the right hand side of any account is called credit sides. अकाउंट सिमिलर ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर हेड रे रिकॉर्ड करिया को हमें अकाउंट कहता से अकाउंट होची कोन ना टी सेफ स्टेटमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें डेबिट कहता और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहता। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर हेड रिकॉर्ड करिवा, लाइक तमे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो से पर्टिकुलर अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड को कौन कहता ना डेबिट कहता और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहता। इन तापरे नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म होची गुड्स। गुड्स कौन ना, इट इम्प्लाइज ऑल दोज आर्टिकल्स व्हिच हैव बीन परचेस्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। सेलिंग करिया पई हमें जहाँ भी एंटरप्राइज बा बिजनेस परचेस करे ताको हमें गुड्स कहता। लाइक सपोज मानि चलो मोर फर्निचर दुकान अछि तो फर्निचर मो पई गुड्स, मोर गोटे बुक स्टोर अछि तो बुक कॉपी पेन ए सब मो पई गुड्स। ओके, तो जोड़ाक बिजनेस रे सेलिंग करिया प्रपोजल परचेस करते हैं आम ताको गुड्स कहता। रॉ मटेरियल ये सब जिन होची कोन ना गुड्स। नेक्स्ट टर्म होची स्टॉक और इन्वेंटरी। स्टॉक रो अदर नेम इज इन्वेंटरी। कौन स्टॉक ना, द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आमे जेतले बिजनेस करता बिजनेस रे एंड रे किछि स्टॉक रहि जाय, किछि गुड्स रहि जाय ताको आमे कोन कहतो ताको क्लोजिंग स्टॉक रे। सेटा रॉ मटेरियल हे पारे, वर्क इन प्रोसेस हे पारे या फिनिश गुड्स रे भी हे पारे। बिजनेस एंड बेलको से इन्वेंटरी को क्लासिफाई कराय छै टू टाइप्स रे, गोटे होची ओपनिंग स्टॉक, गोटे होची क्लोजिंग स्टॉक। बिजनेस एंड जो स्टॉक टा रहले ताको हमें क्लोजिंग स्टॉक कहतो। नेक्स्ट ईयर फुल बिजनेस कंटिन्यू करिया से स्टॉक टा नेक्स्ट ईयर पे कोन हे जे ना ओपनिंग स्टॉक्स। ओके, द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक्स। ओके, नेक्स्ट रिसीव्स। रिसीव कौन ना, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल जोटा हमें रिसीव कर सारचे या फ्यूचर रिसीव करिया ताको हमें रिसीव कहता। ताको भी क्लासिफाई कराय छै टू टाइप्स रे, वन इज रेवेन्यू रिसीव, सेकंड कैपिटल रिसीव। रेवेन्यू रिसीव इट इज द अमाउंट रिसीव इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मली जोटा बिजनेस रे रिसीव कराइटा है, लाइक हमें गुड्स सेल कले ताडो हमें कैश रिसीव करबा या रेंट रिसीव कले, कमिशन रिसीव कले, एरा होची रेवेन्यू रिसीव जोटा कि छोटो अमाउंट। नेक्स्ट कैपिटल रिसीव, इट इज दोज रिसीव व्हिच आर नॉट रेवेन्यू रिसीव। जोटा रेवेन्यू रिसीव नुए, जोटा वन टाइम इट है। मानि चलो मो पाइ कोटे फिक्स एसेट 5 लाख रे ताको मु आज सेल करली तो सेटा होची कैपिटल रिसीव। सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ मोटर कार एरा सब कोटा इंक्लूड ना कैपिटल रिसीव्स जोटा कि वन टाइम इट है आउ इरेगुलर एटा बिजनेस रे, बट रेवेन्यू रिसीव टा रेगुलर बिजनेस रे एटा। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म होची एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर it is the amount spent or liability incurred for the acquiring asset, goods or services. सपोज बिजनेस में किसी गुड्स परचेस कले या किसी एसेट परचेस कले तापे आमे जेतिक अमाउंट स्पेंड करते ताको आमे कोन कहतो एक्सपेंडिचर। सपोज गोटे बिल्डिंग परचेस कले, बिल्डिंग रो कॉस्ट 5 लाख तो 5 लाख बिजनेस रो एक्सपेंडिचर, या किसी रॉ मटेरियल परचेस कले तो सेटा भी होची बिजनेस रो एक्सपेंडिचर्स। ताको डिवाइड कराइ छै बा क्लासिफिकेशन कराइ छै थ्री टाइप्स रे, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड वन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो एक्सपेंडिचर वन टाइम इट है बट तार बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर्स नहीं था। ओके,
The payment made in the purchase of fixed assets from which the benefit will be derived in future is called capital expenditure. माने चल मोटे लैंड किनली या बिल्डिंग किनली या मशीनरी किनली फर्निचर किनली या सब कौन है ना फ्यूचर बेनिफिट देव भी ऑर्गेनाइजेशन से आम सब एक्सपेंडिचर करते हो ताको आम कौन कहते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो ओके नेक्स्ट टर्म होची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जोटा कि रेगुलर बिजनेस थाए डे टू डे एक्सपेंसेस थाए ओके द अमाउंट इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस व्हिच आर कंज्यूम ड्यूरिंग द करेंट पीरियड सो मु किसी रॉ मटेरियल परचेज करी तो करेंट ईयर कंज्यूम पे परचेज कर रेंट डेली सैलरी डेली कमिशन डेली एरा सब कौन करेंट अकाउंटिंग रे स्पेंड है और होची बिजनेस रेगुलर नेचर डे टू डे एक्सपेंसेस बिजनेस को रनिंग कराया जहाँ सब एक्सपेंडिचर होता है ताकू आम कौन कहते हो ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो थर्ड एक्सपेंडिचर होची डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ओके डेफर्ड इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इट इज रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर डेफर्ड मैंने डिले करदे या पोस्टपोन करदे बट एक्सपेंडिचर होची रेवेन्यू नेचर्स आम एडवर्टाइजमेंट सपोज 20,000 स्पेंड कले से करेंट अकाउंटिंग ईयर बट करेंट ईयर मुझे एडवर्टाइजमेंट 5 लाख रुपीज खर्च कर 5 लाख बट से 5 लाख टा मोर करेंट ईयर पे नुहे मुझे सपोज मानि चल 5 इयर्स खर्च कर तो 5 इयर्स जो मुझे खर्च कली पार्ट करदेली ओके तो एव्री ईयर मोर केते राइट हो ना 1 लाख 1 लाख 1 लाख तो 5 इयर्स वैल्यू राइट अफ हो तो ताकू कहते डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू नेचर्स बट गोटे एक्सट्रा वर्ड लगे डेफर्ड जोटा कि डिले करदे पोस्टपोन करदे ओके नेक्स्ट टर्म होची एक्सपेंसेस इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू आम बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते आम जहाँ सब खर्च करते हो लाइक आम रॉ मटेरियल परचेस करवा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बना वेजेस दवा सैलरीज दवा रेंट दवा ये सब गोटे रोचे एक्सपेंसेस ओके नेक्स्ट टर्म होची प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ओके इट इज एन एक्सपेंसेस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस जो एक्सपेंडिचर हम एडवांस रे पे करते हो तार बेनिफिट हम फ्यूचर पीरियड भी नहीं था सपोज गोटे फाइनेंशियल ईयर आम 1 एप्रिल 2024 बिजनेस स्टार्ट कले आम बिजनेस एंड करवा 31 मार्च 2025 रे सपोज बिगनिंग ऑफ द मार्च रो बिगनिंग रे मु घर रेंट लेके 3 मंथ्स रे पे कर देली एवरी मंथ मु घर रेंट पे करे बट मार्च मास रे मु कोन करली नेक्स्ट 3 मंथ्स त माने मु नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे मु 2 मंथ्स एक्स्ट्रा पे कर देछि ओके तो से जो नेक्स्ट 2 मंथ्स रो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर यूज करें कहते कौन प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नेक्स्ट टर्म होची आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड एक्सपेंसेस सरी किंतु पेमेंट है ना इट इज एन एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड सपोज मोर वर्कर को मुझे सैलरी दिए 10,000 रुपीज बट करेंट मंथ करेंट ईयर 10,000 टू 12 तो 1,20,000 बट मु करेंट ईयर में पे कर 1 लाख रुपीज तो से 20,000 दी अच्छी तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे करी ओके तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी आउ प्रीपेड एक्सपेंसेस होची एसेट्स नेक्स्ट टर्म होची इनकम और प्रॉफिट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज इनकम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर डिफरेंस टाको आम कौन कहते इनकम कहते और प्रॉफिट कहते सपोज आमर टोटाल रेवेन्यू इज 5 लाख एंड टोटाल एक्सपेंसेस 4 लाख तो बिजनेस ए वर्ष केते प्रॉफिट होची ना 1 लाख रुपीस प्रॉफिट होची जदि एक्सपेंडिचर अधिक हो इनकम कमी तो आम बिजनेस आम कौन सफर करिया लॉस सफर करिया ओके देन नेक्स्ट टर्म होची गेन इट इज ए प्रॉफिट अपन इरेगुलर नेचर जो इरेगुलर होता है माने चलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मो पाखे गोटे एसेट था जोटा कि 5 लाख परचेस कर 5 इयर्स यूज कर आजिका रेट्रे बुक वैल्यू था 3 लाख बट मुझे 3,20,000 सेल कले सो से 20,000 गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आई होप आप वीडियोटी भल लगी आउ कि वैल्यूएबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड करदी आप वीडियोटी भल लगी तो वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ और फ्रेंड्स मान सहित शेयर करूँ आर नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग टर्म आउ कि जाना थैंक यू।